Sri Vardhan Shringla ji, 10 minutes. आदरणीय उपसभापति महोदय जी, मुझे आज सेकंड अप्रोप्रिएशन बिल के विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट अप्रोप्रिएशन बिल पे भी बोला था। उस समय मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया था, पर 6 मिनट में मुझे रोका गया क्योंकि शायद समय की कमी थी। तो मेरे कुछ मात्र बिंदु उस समय के भी हैं जो मैं आज कहना चाहूँगा। शुरू में ही मैडम, मैं भारत का अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को बधाई देना चाहता हूं। आज अगर दुनिया का माहौल देखें, ज़्यादातर देशों में जीडीपी घटते जा रहा है, इनका रेट ऑफ ग्रोथ घटते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और इनकी ज़्यादातर जो विकासशील देश हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में भारत का अर्थव्यवस्था दुनिया में बहुत ही सकारात्मक दिशा से रूप से देखा जाता है और उसमें अगर हमारे अर्थव्यवस्था को देखें तो 2025-26 साल के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, जिसमें से हम 7.6% रेट ऑफ ग्रोथ अटेन किया था। उसके अलावा हमारे इन्फ्लेशन रेट इसी साल में 2.5% से कम रहा, जो कि हमारे देश में और दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन माना जाता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्थिति और आज का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्थिति आज $725 बिलियन है, जिससे हम 11 महीने से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। और हालांकि आप अगर देखें दुनिया में तो ज़्यादातर देशों का 2 या 3 महीनों का इंपोर्ट्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा स्थिति है। और अगर आप आज का स्थिति देखें, द सिचुएशन दैट वी सी विथ रिगार्ड टू द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, I think it is important to assess the preparations we have made for this emerging situation, not only in the short term, but also over a period of time in the last few years. And I want to just go over that very briefly. The first, of course, is in terms of measures that we have taken in the immediate budget. Now, if we see in this budget, in this appropriations bill, we have made provision for what is called an Economic Stabilisation Fund. This is one of the strongest features in this package and is an instrument of sovereign foresight. This proposed Economic Stabilisation Fund with a total outlay target of 1 lakh crores is a major policy innovation in this year's supplementary demands. Its purpose is not abstract. It creates fiscal headroom for the government to intervene when external shocks begin to transmit directly into the domestic economy through fuel, fertilizer, freight, and other input costs. Sir, given the conflict in the West Asian region, where roughly 20% of global oil supply moves through, any sustained disruption obviously has a direct implication on us. India cannot remove that risk from the world, but what we can do is to prepare for its consequences. The Economic Stabilisation Funds allows the government to cushion the effect of sudden price spikes without resorting to emergency borrowing that would breach fiscal deficit targets. It allows the government to protect households and farmers and maintain a certain stability in our economy. But look at the progress we've made over the years. There was a comment made by fellow parliamentarian Dr. John Brittas that India's reliance on fossil fuels is increasing. Let me tell you about the measures we're taking to increase our production of non-fossil fuels, a move towards green and clean energy. In 2021, Prime Minister Modi was in Glasgow for the Climate Change Summit when he pledged what is called the Panch Amrit. And one of the important points of that Panch Amrit was that by the year 2030, India's total installed electric capacity would be more than 50%.
50% for renewable energy in green energy terms. And I'm happy to say that 4 years before that target, we have already surpassed 51.5% of our installed electric capacity through green energy today. So renewable energy is meeting a major part of our installed electric capacity today. He also made the pledge that we will produce 500 gigawatts of renewable energy by the year 2030. Today, we already have 265 gigawatts of renewable energy. We are producing renewable energy at the rate of 50 gigawatts a year, and we are well on our way to surpass our target of 500 gigawatts of renewable energy by the year 2030. Today, sir, India is the third largest producer of solar energy in the world. We are the fourth largest producer of wind energy in the world. We have a very enviable record there. Not only that, we have recently introduced the Shanti Bill, on which I had also spoken, in which we were able to open up that sector both to private domestic investments and foreign investments, with a goal of raising our production of clean nuclear energy to 100 gigawatts by 2047. So we are moving towards a cleaner, greener energy mix. Keep in mind that India is the initiator of major international level efforts to make the planet greener. The International Solar Alliance is India's initiative. The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure is India's initiative. The Global Biofuel Alliance, which was initiated during our G20 presidency in November 2023, was also a major factor in today contributing to our ethanol mix. We, in our petrol, have a 20% ethanol mix today, which is very, very useful in reducing our dependency on imported fossil fuels. Now, if we look at this particular appropriations bill that is before us, we have many measures that are designed to mitigate today the impact of what's happening in West Asia by moving, as I said, towards a more modernized and sort of a greener system of energy, but transportation also. An allocation of 4,99,000 crores, which is made for creating a world-class infrastructure and seamless connectivity, fully modernized high-speed rail, agriculture and farmer support of 2,32,000, Atmanirbhar defense of 2,19,000, and as I said, renewable energy of 44,000 crores, in addition to nurturing Amrit PD, which is human capital, and public health. Mr. Chairman, I wanted to also mention, अब हाल में ही जब प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे में थे 14 मार्च को, तो उस अवसर पर उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए और इसका टोटल अमाउंट 18,760 करोड़ का अमाउंट था और उसमें से बहुत सारे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, हाईवे मॉडर्नाइजेशन, रेल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स थे जिससे बंगाल के लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। पर अफसोस की ये बात है कि जो भी विकास बंगाल में हुआ है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से बहुत कम इनिशिएटिव्स हैं जो कि बंगाल के लोगों को फ़ायदा मिला और इस कारण से बंगाल मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट से आज लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हो रहा है। ये राज्य में जो लोग देश से बंगाल आते थे रोज़गार के लिए, आज बंगाल के लोग बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं इसके बारे में। प्रधानमंत्री सूरज घर योजना जो है, इसमें से लोगों को 75-80 हज़ार मिल सकता है, एक एक परिवार को मिल सकता है अपने घर में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी लगाने से। मेरे खुद के घर में जो सिलीगुड़ी में हाल में ही मैंने बनाया, इसमें मैंने हमारे ग्रीन भारत का दृष्टिकोण देखते हुए सोलर एनर्जी का प्रबंध किया और उससे मैंने जब राज्य सरकार के पास गया, मैंने कहा कि शासन के पास कि मुझे अपना पीएम घर योजना का फ़ायदा आप दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को इस योजना का कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे देश में, मेरे सरकार की योजना में आपका क्या हक है कि मुझे रोकने का? हमें अपने देश में अपने जो अभियान है, आप देखिए आयुष्मान भारत अभियान,
बंगाल के लोगों को, बंगाल के जनता को 760 करोड़ का एलोकेशन है ये इस योजना के अंतर्गत, और एक पैसा भी यूटिलाइज नहीं हुआ क्योंकि बंगाल का सरकार ये योजना का स्वीकार किया ही नहीं है। तो हमारे गरीब लोगों का क्या हालत होगा जो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए मतलब कुछ फैसिलिटीज़ मांगना चाहते हैं। हमारे दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल के श्रमिक जो चाय के श्रमिक हैं, उनका जो डेली वेज रखा गया बंगाल में 250 रुपये रखे गए बंगाल के सरकार ने। आप अगर साउथ में जाएं, तमिलनाडु में 450 है, आप अगर असम में देखें तो 350 रुपये हैं। तो 250 से क्या गुजारा हो सकता है हमारे लोगों का, आप ये बताइए। ये हालत है बंगाल की। सर, आई विल जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग दैट दिस अप्रोप्रिएशंस बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of the government's effort to insulate us from today's situation, to modernize our infrastructure and economy, to protect our defense and security forces, and to strengthen our health and other infrastructures. Thank you very much, sir. Thank you.